हे गाइस, मैं बहुत समय के बाद आ रहा हूँ एंड मैं मेरे गेमिंग चैनल पे फोकस कर रहा था। तो अगर तुमने देखा नहीं तो मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियोस अपलोड किया नहीं। तो मेरा गेमिंग चैनल है हॉलो कुनाए या कुनाए हॉलो, तुम लोग चेक करो, सर्च करो, आ जाएगा। बलात्रो मैं डिस्पैच खेल रहा है। डिस्पैच इज वन ऑफ फैंटास्टिक गेम एंड मेगा बॉन्ग इसके साथ वीडियोस में बना रहा हूँ, तो उसको डेफिनेटली चेकआउट करो, सपोर्ट करना, लाइक कर देना, ऑल दिस गुड स्टफ। तो मेरे को रिसेंटली बात करना था कि मैं बहुत टाइम से सोचा कि लाइक रिसेंटली सुपर हीरो मूवीज ना हिट नहीं कर रहा जितना अपने को एक एरा था, जैसे 2015 में सिविल वॉर मार्वल का आया था और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस एंड ऑल दोस सुपर हीरो। क्या वी आर ऑन अ सुपर हीरो जो मतलब वो जॉनर है सुपर हीरोज का, उसमें वी आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ फैन बेस करके। एंड नया सुपर हीरोज हैज नॉट हिटिंग टू मी। और मेरे बैक ऑफ द माइंड बैटमैन जो 2022 में आया था मैट रीव्स का, इट रियली स्टिक्स टू मी टिल डेट। सो रिसेंटली आई वेंट टू मुंबई। मैं मुंबई में मेरे फैमिली के साथ मिलने के लिए गया था और वहाँ पे मेरा जो भी 4K टीवी था, मेरे पापा के पास एक होम थिएटर सिस्टम टाइप है, तो उसमें मेरे को कुछ एक अच्छा 4K पिक्चर देखने का था, एक अच्छा साउंड सिस्टम के साथ। तो मैं जस्ट स्क्रॉल थ्रू कर रहा था, आई वाज लाइक व्हाई नॉट द बैटमैन। क्योंकि मेरे को याद है, क्योंकि मैं थिएटर में इसको 3 बार देखा, ऐसा प्रीमियर शो गया था मैं बैटमैन का, इट्स वन ऑफ माई बेस्ट। मेरे को मेरे दिमाग में स्टिल इट रिंग्स टू मी दैट द साउंड ट्रैक, द बैट मोबिल का जो साउंड है और ऑल द फाइट सीक्वेंस का सब करके। तो मेरे पास थोड़ा ठीक है, लेट्स रीविजिट द ओल्ड मास्टरपीस दैट हैपेंड इन 2022। रियली लॉट ऑफ पीपल एंजॉयड इट, डीसी कम्युनिटी माइट बी। So plug the DVD, Blu-ray basically, and I started watching it. My dad has never seen the Batman movie. Okay, so I don't know why. He was out of the superhero genre for a long time, so I had to bring him back. वैसा type था, and I started watching it. He was really hooked in the movie, and let me tell you, the sound quality, the film, the cinematography is absolute amazing. Batman का, like, I'm not even saying like as a Batman glazer. Okay, I recently मैं पढ़ रहा था थोड़ा कॉमिक्स। अभी DC कॉमिक्स एक नया आया है एब्सोल्यूट करके, एब्सोल्यूट यूनिवर्स करके। उसमें एक डार्क सेड कुछ एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है और नया नया लाइक बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन सब है। पर वो लोग लाइक बैटमैन, ब्रूस वेन रिच नहीं है, या सुपरमैन के पास अपना स्मॉल विल या क्रिप्टॉन नहीं है, ऐसा कुछ तो ये है नया नया न्यू कैरेक्टर्स। बट द एब्सोल्यूट बैटमैन कॉमिक्स इज एब्सोल्यूट इनसेन, इट्स मेनेसिंग एंड रियली द गॉथम का एक फील, एक इंसानिटी फील होता है। और वो जो बैटमैन मेरे लिए ना, इट्स ऑल अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ गॉथम, हाउ गॉथम इज गॉथम। इफ यू आर एबल टू शो गॉथम वेरी मतलब साइकियाट्रिक असाइलम टाइप, तुम उसको दिखाओगे ना, आई विल हैव द फील कि ओके, नो वंडर ब्रूस वेन इज बैटमैन पूरे रात को करके। समथिंग लैग्ड इन डार्क नाइट एंड समथिंग लैग्ड इन डार्क नाइट राइजेस, द क्रिस्टोफर नोलन का जो मूवी है, क्योंकि उसमें जो गौतम दिखा है वो एकदम न्यूयॉर्क सिटी दिखा है, एकदम ब्राइट ऑस्ट्रेलियन टाइप सिटी दिखा है, सिडनी वैसे दिखा है। तो रियली डजंट गेट मी और कैप्टिवेट टू मी दैट ओ शिट दिस इज गौतम, यहाँ पे कोई क्यों रहेगा, वो क्वेश्चन को बेग नहीं करता जो क्रिस्टोफर यूनिवर्स में। एंड समथिंग दैट आई रियली एन्जॉयड डूइंग। मैं ये नहीं बोलेगा कि जैक स्नाइडर का जो यूनिवर्स है थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें मोर ओवर ऑन द मेट्रोपोलिस साइड भी था सुपरमैन का सब करके। बट the Batman games, one of my favorite, Arkham Asylum, Arkham City, and Arkham Origins. The night, one night in Christmas, जब Batman fight करता है 8 villains को, it's one of my memorable games of Warner Brothers. And उसका जो Gotham है, it really feels the grunginess, the darkness, the gothic nature of Gotham. And I think somehow Matt Reeves उसका कैमरा सिनेमाटोग्राफर एनामॉर्फिक लेंसेस लेके वो कैप्चर किया द स्टनिंग विजुअल ऑफ द डार्की गौतम। एंड मेरे को पूरा जब मैं पिक्चर देख रहा था मुझे लग रहा था कि लाइक, और भी दिस इज माई फोर्थ वॉचिंग। ओके, मेरा फोर्थ वॉचिंग में अभी भी क्लूज पकड़ रहा वो मूवी का, लाइक द बैकग्राउंड में ये रखा है वो लोग ने, बहुत सारा छोटा छोटा डिटेल्स जो मैं सेकेंड या थर्ड व्यूइंग में नहीं देखा, समझ में आ रहा है मेरे को। एंड द cinematography is so really good and the casting is great and रॉबर्ट पैट, सब लोग गाली दे रहे थे रॉबर्ट पैटिंसन को कि लाइक टॉयलेट का लड़का है, टॉयलेट का लड़का क्या ही कर लेगा, इज द ईमो बॉय। But it works so well here with Batman being that emo person here. And ये
वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइटेरिया था मेरे लिए कि बैटमैन पिक्चर में बैटमैन तुमको ज़्यादा दिखता नहीं है, लाइक ब्रूस वेन ही ज़्यादा दिखता है या थोड़ा बहुत कम लगता है। फॉर डार्क नाइट में जोकर ज़्यादा है बट ब्रूस ज़्यादा है और बैटमैन बहुत कम है। और यहाँ पे इट्स फुल एंड फुल बैटमैन, बैटमैन बीइंग दे, being a young Batman and not like a very smart Batman, but वो clues follow कर रहा है, it's year 2 project for him and slowly getting on the nerves of being a detective comic. Detective DC is called detective comic and उसमें से Batman was the first detective who used to stay late at night and hunting for clues and finding propagandas inside the Gotham culture and the nature of the villains जो भी है, चाहे बहुत सारा है। आई मीन यू नो द जिस्ट ऑफ ऑल द फायरफ्लाई, स्कैरक्रो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुमको पता है। एंड some of the comic takes like the long Halloween or coming to the year one Batman or the there is the cult जो Court of Owls है, all this is one of the primiest Batman comics or Batman animated movies which takes a lot of inculcation to make a movie like the Batman. It has the essence and the aura of that. And Robert Pattinson as Batman when the Nirvana का जो गाना प्ले होता है, it really creeps out how endangering that particular, and उसमें बोलता भी है fear is a tool, they think I come from shadows but I am the shadow। वो जो इंट्रो है, उफ, वो इंट्रो आज भी मैं सुनता है मेरे को लाइक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाइक इट्स हैलोवीन नाइट October 31st, I am watching, the city is crowded, that is such a freaking monologue and I think Matt Reeves have really done that, something I've not seen or not perceived in recent superhero movies जो मुझे दिखता ही नहीं है आजकल, that certain dialogues that really capture you, really hit you करके। and the detailing of that movie में जहाँ पे ब्रूस वेन ऐसा पूरा दिन वो रात को ऐसा I'm a nocturnal animal 2 years I can't remember I'm using the recorder सब, and वो एक point of view दिखाता है जहाँ पे you feel like you are really in the shoes of Batman कि like shit, there is this serial killer who's killing people and leaving clues for the Batman. Why Batman? Why not anybody else? And who are these people? And everyone is seeing this new guy with Commissioner Gordon. So that entire movie, it's 3 hours of long movie. It really, I think they made you feel as a Batman. That's why I think लोग बोल रहे हैं इसमें एक्शन नहीं है, इसमें थोड़ा कम है, बट दैट्स व्हाट द थिंग इज लाइक बैटमैन इज ऑलवेज बीन अबाउट बीइंग द बेस्ट डिटेक्टिव आउट हियर। यस, उसके पास आगे आगे फ्यूचर में वो उसको गैजेट्स वीजेट्स है करके, बट हियर ही इज जस्ट ट्राइंग टू बी द हीलर, द वेंजेंस। ही वॉन्ट्स टू, मतलब उसको बदला लेने का, उसको रिवेंज लेने का, उसका जो ब्रूटैलिटी था उसके पेरेंट्स से, उसमें रिबिल तो नहीं किया किसने मारा है, मे बी जो चिल किया है या एनी अदर रैंडम डूड, और हाउ देयर पेरेंट्स हैव बीन किल्ड ऑफ मे बी बाय जो फाल्को ने, जो एंटायर मूवी इज द प्लॉट इज बेसिकली, द प्लॉट ट्विस्ट इज बेसिकली, एंड हिम गोइंग नाइट एंड नाइट, क्योंकि वो बड़े लोग को नहीं ले रहा, वो पॉलिटिशियंस, वो रिच पीपल को नहीं मार रहा। इवन दो हिम बीइंग अ रिच पर्सन, इवन दो नोइंग हाउ करप्ट गौतम इज, वो उनमें से नहीं मार रहा है। ही इज गोइंग फॉर द लोअर पीपल, द राउडी लोग रहते ना, जो ऐसा रोगिज्म करता है, पिट पॉकेट करता है, पॉकेट मार रवि रहता है, उनको जाके वो टपका के मार रहा है। And that I really can really understand the psyche behind Bruce Wayne or Bruce Wayne trying to be a Batman। वो बोलता भी है I don't know whether this might work but I have to try, क्योंकि गौतम इस उतना गिरा हुआ है। गौतम इलेक्शन का जो कमिश्नर का जो इलेक्शन मेयर है उसको टपका दिया करके, फॉर व्हाट रीजन, गॉड नोज फॉर व्हाट रीजन। So lot of characters and everything that dwells into that. I read some takes, मतलब basically why this movie is bad or why this movie is masterpiece. No one really understand the essence of why this Batman is talking about vengeance and healing. वो end तक वो people are saying, oh, there is no Bruce Wayne here, or he's not acting like a Bruce Wayne, that millionaire, the billionaire, the playboy personality, Tony Stark जैसा, because वो इतना साल से वो, मतलब 2 साल से हुआ, अभी भी बैटमैन नहीं हो, अभी तक वो ब्रूस वेन बना नहीं हो अभी तक, तो ही रियली क्रीप्स दैट बैटमैन थ्रू एंड थ्रू आउट द ब्रूस वेन कैरेक्टर। और दिखता है कि अभी भी वो ब्रूस वेन फुल वो पर्सनैलिटी लिया नहीं हो, उसके लिए तो बोलता है Mr. Bruce Wayne, you could help the city. The city is dying for so many things, but you're doing nothing करके, क्योंकि he doesn't know, he doesn't understand कि shit मैं ब्रूस वेन बन के भी कुछ कर सकता करके नहीं।
उसको सब बदला लेने के उसकी, he just in the dream psyche of vengeance as of being a Batman for through and out. So, and bringing Riddler, it is really an amazing take कि कभी बनाया नहीं है. माना वो थोड़ा कॉपी किया Zodiac Killer का, but Zodiac Killer is also like a good take to happen in like Gotham City. And yeah, the movie really, my dad was really into it, and उसको like he was really asking me like, what is the notion of like Falcone कौन है, ये Penguin कौन है, Moroni कौन है करके. He wanted to know the ties between the blood bonds क्या है करके. And he was really enjoying it because मैं और dad सुपरमैन देखने गया था थिएटर में. ही हेटेड दैट शिट. ही हेटेड इट. तुमको ये रखना चाहिए, ही इज कमिंग फ्रॉम एन एरा ऑफ द ओल्ड सुपरमैन, द सुपरमैन रिटर्न्स, द सुपरमैन 3-2-1 जो भी था, द 80s 85 90s वाला सुपरमैन ना. तो उसके बाद व्हेन ही सिंग, ऑब्वियसली ही लव्स मैन ऑफ स्टील. लाइक मैन ऑफ स्टील इज वन ऑफ हिज फेवरेट फिल्म्स, no doubt about that. And when he comes to see this James Gunn ka Superman, he is really not there. He's like, nah, किसके लिए निकाला उसको भी पता नहीं है. But he didn't like it. He awfully hated it. But then I showed him the Batman, and he loved it like anything. So something about this movie is that it can capture a younger audience also and an older audience also. So I think that is the essence of a lot of people like to be Batman. They want to be the Batman. So this movie like makes them as a like Batman look through the lens of Batman, like how he's struggling. क्योंकि उसके पास powers नहीं है. The powers he is like he's smart, but ये Batman वो भी नहीं है. वो थोड़ा यही है, नारियल ही अंदर का, timid. He is timid. He is doing mistakes. उसको वो भी समझ में आता है राटा लाडा क्या है. Like is he Spanish? Lada or Sparrow? ये बोलते penguin बोलते हैं. Rata Lada. That's the worst Spanish I ever seen. Don't even understand that. So yeah, that is like a really take on the Batman. And Matt Reeves is such a great director. Like he has done Planet of the Apes and Cloverfield. I wanted to really, man. I wish that Batman 2 comes sooner. Because I just heard the news that Batman have started shooting in Scotland. I really hope I know it's going to be a winter take या winter setting में होने वाला हो. So yeah, that's and it's been 5 years, and that is the only movie like makes me come back and watch it again and again. I know it's 3 hours. I know it's long. I know people might feel boring. People might say, but if you really understand what is happening, what is the criminal activity happening in Gotham, who is fighting who, क्या है उन लोग का हायरार्की, कौन पुअर कौन रिच क्लास कौन है. वो लड़की बोलती है, कौन सेलिना काय बोलती है कि दैट इज 1% पॉपुलेशन दैट इज अ बार इनसाइड अ बार, सॉरी क्लब इनसाइड अ क्लब करके. सो दोस आर द स्मॉलर डिटेल्स. And why Anika, that girl, got killed, for what reason, why she was with Mayor. So there are a lot of like clues left here and there. And I really hope, this is my small theory for Batman Part 2, विंटर में हो रहा है. तो ऑब्वियसली मैट रिव्स ने बोला कि ही विल नॉट ब्रिंग एनी विलन्स फ्रॉम द प्रीवियस मूवीज. इज ब्रिंगिंग अ न्यू विलन. सो आई हैव टू थिंक इट हैज टू बी लाइक हश. हश को टीज किया था, पर रिडलर एंड हश आर लाइक समवन सिमिलर. तो हश नहीं रहेगा, मिस्टर फ्रीज भी नहीं रहेगा, क्योंकि मिस्टर फ्रीज इज समवन, आई मीन होएगा तो बेटर ही है. स्नो में वही बेटर टाइप होता है, फ्रीज ही बेटर रहता है. मे बी फायर फ्लाई, आई डोंट नो, क्योंकि फायर हो तो होगा नहीं मोस्टली. पेंगुइन तो डेफिनेटली रहेगा, ही विल बी द अंडरलॉर्ड. पेंगुइन सीरीज भी बहुत सही था. हु इज हेल्स इज रिमेनिंग. कोर्ट ऑफ आउल्स कह रहे तो अच्छा है. आई थिंक कोर्ट ऑफ आउल्स डिजर्व अ सीक्वल. इफ इट डज इट वेल, इट वुड बी फ्रिकिंग अमेजिंग. बट देयर आर अदर कंटेंट, मैड हैटर है, क्ले फेस है, यू नेवर नो. स्कैरक्रो भी है, स्कैरक्रो कर लिया है. तो दैट इज शिवा. बहुत सारे अच्छे अच्छे विलन्स तो है. किलर क्रॉक भी कर लिया आई थिंक. सो एंड या I love Robert Pattinson as Batman. I think he's the Batman. He's my favorite Batman. If you have any opinions on why he's not a favorite Batman, definitely comments में डाल दो. Maybe I'll reply to see what you all think about it. For me, Batman is Robert Pattinson. Like he looks menacing. Bruce Wayne, maybe I'll keep Ben Affleck, because I liked him portraying the old
Bruce Wayne, okay, not the young Bruce Wayne, old Bruce Wayne, the aged Bruce Wayne, the retired Bruce Wayne, जो Buddha or he's on the age of 50. So and it mainly taken from the comics of the Dark Knight Returns Part 1 Part 2 करके वो कॉमिक और मूवी एनिमेटेड मूवी भी है उसका. एंड आई डोंट लाइक बेल utna. Like Bale is not my favorite Batman, and neither as a Bruce Wayne too. Like he's very middle or average for me. Okay, hey, for me. And Batman suit I like about Val Kilmer का suit मुझे बहुत पसंद है. Val Kilmer suit is really good. Like it is like a very pitch black suit, matte black type. And Michael Keaton as a Bruce Wayne, he's okay for the olden time. He's good. I don't know whether I missed anybody. I mean, George Clooney, I don't even consider. But yeah, I hope there are new cast, new shows and everything. चलो मेरे यहाँ पे बंद कर देते हैं. I've ranted a lot about this superhero masterpiece. And कभी rarely ऐसा हुआ है कि एक लेस देन मोर सा एकदम मार धाड़ एक्शनेबल बट रियली ग्राउंडेड टू रियलिटी अ बैटमैन मूवी. इतना इतना मतलब दैट्स वेरी बोल्ड एंड रिस्की मूव टू डू. एंड मैट रिव्स सर ने किया तो respect, hats off to Robert Pattinson, hats off to all the cast and crew, and respect to Matt Reeves for bringing Batman Part 2. Hopefully it is as good as that, क्योंकि 5 साल लगा स्क्रिप्ट लिखने में, तो hopefully it is worth it. Yeah, it's your boy Kunal. I'll catch you guys later on a new video. See ya.